बेसिक रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हमने ऑलरेडी देख लिए है. सो टुडे वी विल सी सिंक्रोनिक रूल्स फॉर इन्फेरेंस. तो सिंक्रोनिक रूल्स हो सकते हैं आइदर डायग्नोस्टिक रूल्स और कैजुअल रूल्स. तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक रूल्स. दिस रूल टेक्स अस फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन टू हिडन इन्फॉर्मेशन. सो वॉट एवर ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन करंटली अवेलेबल है और करंट इन्फॉर्मेशन जिस किसी भी हिडन इन्फॉर्मेशन को पॉइंट करती है, दिस इज गिवन बाय डायग्नोस्टिक रूल्स. एग्जाम्पल, इफ स्क्वायर इज ब्रेजी देन एडजेसेंट स्क्वायर मस्ट कंटेन अ पिट. मतलब कि करंट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि स्क्वायर इज ब्रीजी, स्क्वायर कंटेन्स ब्रीज. सो ये करंटली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन कौन सी हिडन इन्फॉर्मेशन को पॉइंट करती है. सो द हिडन इन्फॉर्मेशन इज कि एडजेसेंट स्क्वायर मस्ट कंटेन अ पिट. ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन है कि स्क्वायर इज अ ब्रीजी एंड हिडन इन्फॉर्मेशन है कि इफ स्क्वायर इज ब्रीजी देन एडजेसेंट स्क्वायर. सो यहाँ एक लॉजिक रिप्रेजेंटेशन का इसका डेनोशन भी गिवन है, लाइक फॉर ऑल एस वेयर एस इज ब्रीजी इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर such that R is adjacent to S adjacent RS and pit of R, that is R is the pit. In the same way second sentence भी given है कि if square is not breezy then no adjacent square contains a pit. उसका denotation भी given है. So we have to just give a negation before breezy of S and there exists R, adjacent RS and pit of R. तो अगर अब हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करें तो we will obtain a denotation like for all S where S is breezy, double implies bidirectional connective, there exists R, adjacent RS and pit of R. मतलब कि अगर कोई स्क्वायर contains breeze then all the squares adjacent to this square must contain a pit. Any square contains a pit then all the squares adjacent to this pit will be breezy. Now the second rule is causal rules. So in this step hidden information will infer a new information. So यहाँ hidden information given है कि there is a pit in any of the square. वो हमें पता नहीं है कि कौन से स्क्वायर में पिट प्रेजेंट है. सो द इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है. तो इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी अ पिट इज द कॉज फॉर ब्रीज. सो वेयर एवर देयर विल बी ब्रीजी स्क्वायर्स वी कैन फाइंड अ पिट ओनली देयर. सो अ पिट causes all the squares to be breezy. सो डायग्नोस्टिक रूल में जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता था उसे हम डायरेक्टली यूज़ करते थे, लाइक इफ द करंट स्क्वायर इज ब्रीजी, इफ करंट स्क्वायर कंटेन्स ब्रीज देन ऑब्वियसली एडजेसेंट स्क्वायर मस्ट कंटेन अ पिट. एंड कैजुअल रूल्स क्या है कि कैजुअल रूल्स में हमेशा जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, लाइक अ पिट कॉज एडजेसेंट स्क्वायर्स टू बी ब्रीजी. सो ये जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज इट गिव्स द जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक अ पिट कॉज ऑल एडजेसेंट स्क्वायर्स टू बी ब्रीजी. तो पिट वाले स्क्वायर में पहुंचने के बाद ये तो हम देखेंगे नहीं कि एडजेसेंट स्क्वायर इज ब्रीजी और नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली वंस एजेंट रिचेज टू अ स्क्वायर कंटेनिंग पिट देन द गेम विल बी ओवर. सो डायरेक्टली देयर इज नो यूज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. सो दिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए अगेन एक डेरिवेशन की नीड है. सो अ पिट कॉज ऑल एडजेसेंट स्क्वायर्स टू बी ब्रीजी. नाउ इफ करंट स्क्वायर इज ब्रीजी देन एडजेसेंट स्क्वायर मस्ट कंटेन अ पिट. तो जो सेकेंड सेंटेंस है वी कैन यूज दैट डायरेक्टली फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन द वम्पस वर्ल्ड. So these both causal and diagnostic were synchronic rules, mainly for the purpose of inference. Thank you.